मिनिस्ट्री, जैसे सरकार का मिनिस्ट्री, तो इस्कॉन जीबीसी के अंदर अलग मिनिस्ट्री, जैसे वैष्णवी मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री है, उस प्रकार की एक मिनिस्ट्री है इस्कॉन मिनिस्ट्री फॉर काउ प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर। तो गो माता, गो पालन, गो सुरक्षा और कृषि संबंधित एक मिनिस्ट्री है इस्कॉन में। वो उसके जो कृषि गोरक्षा, कृषि गोरक्षा, ये एक्चुअली भगवद गीता में भी ये धारणा कृषि गोरक्षा वाले हैं। तो इस्कॉन जो मिनिस्ट्री है, इस्कॉन काउ प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर, उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है वो HG कालाकंठ प्रभु। और प्रभु है ओरिजिनली ब्राजील से, ब्राजील नाम सुना, रोनाल्डो काका। सो और पूरे विश्व में इस्कॉन के जितने भी सब कुछ पूरे वर्ल्ड में सब जगह, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, सभी कंट्रीज में भोपाल और प्रभु ये भारतीय कल्चर तो इतना अच्छा लगते हैं कि प्रभु एक परिवार के साथ मायापुर में शिफ्ट बाकी समय भ्रमण करते रहते हैं, सबको गाइड करते रहते हैं। और प्रभु एक्चुअली प्रोफेशनली इज एग्रीकल्चर एग्रोनॉमिस्ट मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर एक पढ़ाई की और काफी इससे इसके ऊपर नॉलेज रखते हैं सभी विषय में। तो इसी संबंधित सेमिनार वगैरह देते रहते हैं, गो माता और इस प्रकार से सब चीजें। ये हमारा परम सौभाग्य है, प्रभु जी भोपाल बता रहे हैं, हम प्रभु जी को स्वागत करते हैं। और साथ में पर्सनली भी मेरे साथ काफी अच्छा रिलेशन है। हम जब अमेरिका में थे, प्रभु जी के सानिध्य में सेवा करते थे, काफी लंबे समय तक एक साथ में कृषि करते थे, टुगेदर। तो उसमें हम लोग करते थे एक साथ में 120 एकड़ जमीन था हमारा प्रोजेक्ट। तो प्रभु आते थे कभी कभी मार्गदर्शन देने के लिए, हम कालखंड प्रभु का स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कालखंड प्रभु की His Grace Rasananda Prabhu ki jai. जनक जी प्रभु आइए प्रभु जी का माल्यार्पण करें। प्रभु जी Oh, Hare Krishna. Dhanyavad. Dhanyavad. Hare Krishna. Thank you so much. Beautiful temple. Oh, Hare Krishna. Sundaram. Sundaram. Okay. You ready? So they're deciding the translation. Who's going to do the translation, right? Okay. Hey, Rasanandaji, can you read the verse? Yeah. Oh, no more? Okay, I'll do no more. Okay. So, today we're going to read from the Bhagavad-Gita. The Bhagavad-Gita is a very special book. Because in the Bhagavad-Gita, all the essence of the Vedas are condensed in one book. If you understand the Bhagavad-Gita, you understand everything. And sometimes Srila Prabhupada would say, if there was to be one book of spirituality in the universe, that will be the Bhagavad-Gita. Okay. So the Bhagavad-Gita is like a sandwich. Sandwich? Sandwich? Sandwich Hindi? Oh!
6 chapters is the bread. Bread, Hindi. Oh, very good Hindi. Okay. This is the foundation, the mechanical part of the Bhagavad-Gita. Karma, yoga, Astanga yoga. कर्म अष्टांग योग ये भगवद गीता का आधार है प्रथम अध्याय The other chapters 13 to 18 is the other bread. 13 से 18 अध्याय तक दूसरी ब्रेड है This is the application of the first bread. ये पहले ब्रेड का व्यवहार And in the middle, that is the secret. And what is the secret? Paneer. The secret is bhakti yoga is in the middle. The most confidential secret of the universe. And that is, what is the most confidential secret of the world for these young ladies in the front? What is the biggest secret of the universe? Spirituality. Yes, you're right. But spirituality is a big secret. Let's find a smaller secret. Anybody else? What is the biggest secret of the universe? Yes. Who we are. Yes. And to know that, you must know 3 things. Who you are, who is the supreme person, and what's the relationship between us and him. And that secret is only revealed when we become very pure. Because right now, I think I am skinny, I'm tall, I have a big nose. Many things we think about ourselves, right? But actually, this is not who we are. We are something much different than that. Satchitananda Vigraha. And we have no clue who we are. We speak about it. We speak about this. But we don't know. We haven't seen it. We don't know what's our relationship with the Supreme. Isn't it? So that identity, that secret, is only revealed when you find a genuine spiritual master. And he reveals who you are, who I am, who I am, and who everybody else is, But that's a personal relationship. A personal. Sambandho. Yes. Okay? So this verse that we are reading today, it's talking about a very special characteristic of a person who has elevated his consciousness. Prabhu, can you read the Sanskrit? Can you read the verse?
lokam nadvijate Shamasha Mukto yaha chame priyaha. Moko yacha chame priyaha. You have a Hindi writing here or it's English? You have a Hindi Bhagavad Gita? Is it? Any Hindi Bhagavad Gita around? Okay, so please repeat. Yasmat. Then it's better that he says because it's in Hindi, no? From whom? I think fine. I think it's better to do in Hindi because everybody understands Hindi here. Yes? Okay. So let him do in Hindi. Shabdat. Yasmat. Yasmat. Jisse. From whom? Na. Kabhi nahi. Never. Udvijate. Udvijate. Udvigna hote hain. Are agitated. Lokaha. Lokaha. Log. People. Lokat. Lokat. Logon se. From people. Na. Kabhi nahi. Never. Udvijate. Udvijate. विचलित होता है. Is disturbed. Cha. भी. Yaha. जो. Jo. हर्ष. Harsha. सुख. From happiness. अमर्ष. Amasha. दुख. Distress. भय. Vaya. भय. Vaya. उद्वेगी. Udagi. तथा चिंता से. Fear. मुक्तः. Muktaha. मुक्त. Freed. यह. Yaha. जो. Who? सह. Saha. वह. Anyone. च. Cha. भी. Yes. So. में. Me. मेरा. To me. प्रियः. Priyaha. प्रिय. Priya. अनुभव. Should I read in English for anybody listening? No. No. Everybody understand Hindi, please. अनुवाद. जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है. तात्पर्य. इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है. ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है. अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो. साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता. यह भगवत कृपा का ही फल है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से शुद्ध नहीं होता. वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते. सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा इच्छा से पूर्ण हो जाता है. जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है. ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है. Priya. Priyaha. Huh? Very dear. So. Almagyana Timirandasyam Jananjanam Shalakaya Chakshuran Militan Yenam Tasmaye Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I didn't hear. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That was better. Hare Krishna. So it's a pleasure to be here in Bhopal. I found this morning such a big audience of educated gentlemen. Educated, enlightened, intelligent. ITs, engineers, mechanical engineers, software engineers. IT, yes, Hindi word, IT, right, okay. But everyone was interested to know Krishna. That is the perfection of knowledge. And I was explaining it in the morning because, like 20 years back, we didn't have cell phones. We had this huge Motorola, like a stone. You had to open it, was huge to speak, wasn't it? Isn't it? You remember? Some of you, the old people, remember? I'm the old people here. And very soon the technology evolved. Like now, this phone is not only a phone. It's your life. Isn't it? When you go from the room, first thing you do, hey, where's my phone? Yeah? And if your phone is lost, you say, my WhatsApp contacts, my bank account. Isn't it? My Instagram. Everything is finished. It's because today the telephone has become your identity. And the companies sell your information to make money with it. So everything you like is the algorithms trying to understand what you like, and they're selling this to companies who want to sell something for you. I don't know it happened to you, but sometimes I'm thinking about something and it appears on my phone. I say, what's this? I didn't even speak. It's here. This is very strange. Have you had this experience? Someone has? Sometimes you're speaking about something random, like I was speaking about planting ladies' fingers. Bindi. Bindi, God? Planting, how do you say planting? Huh? Lagana. Lagana Bindi or Bindi Lagana? Bindi Lagana. So I am speaking to my friends, and guess what in my phone? How to plant Bindi. This is very strange. Very strange. So, this has become your identity. You want to buy something, you put your phone and it's paid. I saw this yesterday. You go to the airport, your boarding pass, sir. Isn't it?
So this has become your identity. ये हमारी पहचान बन चुका है. So if you lose your identity, you're in a very desperate situation. यदि आप अपनी पहचान खो देते हैं तो आप बहुत ही असमंजस स्थिति में हो जाते हैं. But this is temporary. परंतु ये अनित्य है. As I said this morning, maybe in 20 years' time you have a little chip here inside your skin. और मैं सुबह बता रहा था कि 20 साल बाद हो सकता है कि यहाँ पर हमारे हाथ में चिप लगी हुई होगी. And you say, Mercedes, open the door. और जो चिप में हम बोलेंगे कि गेट खोल दीजिए, द्वार खोल दीजिए तो गेट खुल जाएगा. Mercedes, come here. मर्सिडीज मेरे पास में आ जाओ तो कार चल के आ जाएगी पास में. This is already happening, right? With Siri. You say, Siri, turn on the phone. The phone turns on. तो ये ऐसी टेक्निक पहले से ही आ चुकी है. ऐसा होता है. So maybe this phone will not exist. हो सकता है 20 साल बाद ये फोन हो ही ना. Just like we don't have any more video cassette. You remember that? Video cassette? The old people here. CD player. जैसे पहले डीवीडी प्लेयर होता था, सीडी कैसेट्स होते थे, लेकिन अब वो सब नहीं है. If you go back a little, a vinyl record, पहले LP. You know the black record that you put on a... पहले रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था बड़ा सा, लेकिन अब वो नहीं होता है. Do you know what this is? Do you know? She doesn't even know. You see? It's finished. So it's temporary. ये सब अनित्य है. And the majority of the intelligent people of the world today is thinking how to make a better phone. और जो बुद्धिमान लोग हैं संसार के, वो सोचते हैं कि और अच्छा मोबाइल कैसे बनाया जाए. So this knowledge is temporary. ये ज्ञान अनित्य है. And it will always be temporary because it's the material world. और ये हमेशा अनित्य रहेगा क्योंकि ये भौतिक है. But when you inquire about Krishna, परंतु जब हम कृष्ण के विषय में पूछते हैं, Krishna is always Krishna. कृष्ण तो सदैव कृष्ण ही है. Look how beautiful he is. देखिए वो कितने सुंदर है. He's standing in Vrindavan with his flute, looking at you with that beautiful eyes. वृंदावन में अपनी मुरली धारण करके वो सुंदर नेत्रों से आपको देख रहे हैं. And his associates besides him, like Srimati Radharani. वो श्रीमती राधा रानी के संग में है. And every day he goes out with the cows. वो प्रतिदिन वो गायों के साथ जाते हैं. Every day. You want to know a little story about Krishna and the cows? प्रतिदिन जाते हैं. क्या आप गाय के साथ उनकी कुछ लीला सुनना चाहेंगे? ठीक है? अच्छा. So, in the morning, the cowherd boys, the gopas, तो प्रातः काल में जो गोप थे, I mean morning no, like 1 a.m. in the morning. हाँ, जैसे सुबह 1 बजे, They are so in anxiety to see Krishna that they run to Mother Yashoda house and Mother Yashoda, is Krishna ready? वो कृष्ण को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं. वो दौड़ते हुए जाते हैं, गेट खटखटाते हैं और बोलते हैं, मैया यशोदा, क्या कृष्ण तैयार हो चुके हैं? And Mother Yashoda says, it's 1 a.m., go to sleep, it's not time yet. यशोदा बोलती है, अभी रात के 1 बज रहे हैं, अभी सभी सोने का समय है, घर जाके सो जाओ. Then 2 a.m., Mother Yashoda, is Krishna ready? तो फिर गोप बालक 2 बजे फिर से आते हैं, फिर आके द्वार खटखटाते हैं. Mother Yashoda says, it's 2 a.m., go to sleep. यशोदा बोलती है, अभी 2 बज रहे हैं, अभी जाके सो जाओ. And like this they go until 5 a.m. इस प्रकार से वो 3-4 करते 5 बजे तक आते हैं बार-बार. Then they get very tired फिर वो सारे गोप बालक थक जाते हैं and they go to sleep. और फिर वो सो जाते हैं. And then Krishna wakes up तब कृष्ण उठ जाते हैं. and says, Are, where are the gopas? पूछते हैं, अरे गोप सब कहाँ चले गए? So he goes, come on everybody, it's time to go with the cows. तो फिर कृष्ण जाते हैं सब गोप के पास और बोलते हैं, चलो उठो सब, अब गाय चराने का समय है. Now this happened 5,000 years ago. ये 5,000 साल पहले हुआ था. It's happening today. ये अभी भी हो रहा है. And it will happen 5,000 years after. और ये 5,000 साल बाद भी होगा. So this is the eternal knowledge. तो ये नित्य लीला है. And every one of us has a specific relationship with Krishna. और हम सभी का कृष्ण के साथ नित्य संबंध है, विशेष संबंध है. And that relationship is revealed by your spiritual master. और वो संबंध गुरु की कृपा से प्रकट होता है, प्रकाशित होता है. Okay? And in this verse of the Bhagavad-Gita, Prabhupada is telling us
भगवद गीता के श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं that a devotee of the Lord is never in anxiety nor put anyone into anxiety. भगवान का जो भक्त होता है वो स्वयं भी चिंतित नहीं रहता है और दूसरों को भी चिंता में नहीं डालता है. Okay? And there's a small pastime with Sri Hanumanji. हनुमान जी की एक लीला देखते हैं. When Lord Rama had to make a bridge to Sita. जब ब्रह्मा जी जब भगवान राम को एक Okay. सेतु बनाना था सीता जी की रक्षा करने के लिए. Hanuman was carrying this huge हनुमान अपने हाथों में एक बड़ा सा पर्वत लेकर आ रहे थे. and the small little ants were carrying very tiny rocks. छोटी सी गिलहरी एक छोटा सा पत्थर लेकर चींटी एक छोटा सा कंकड़ लेकर जा रही है. So Hanuman was saying, please, I need to pass open space. तो हनुमान जी उस चींटी से बोले कि मुझे रास्ता दो, मुझे ज्यादा जगह चाहिए निकलने के लिए. Lord Rama chastised him. तो ब्रह्मा जी ने उसको उनको डांटा. He says, रामचंद्र ने उसको डांटा. yes. Because Rama was saying, for them, that's a big seva. तो राम जी बोले कि वो चींटी के लिए बहुत बड़ी सेवा है. As much as this is for you, that's for them. Maybe for you this is nothing. You could do 3 times more. हनुमान तुम जो सेवा कर रहे हो वो सेवा और चींटी जो सेवा कर रही है वो सेवा ये दोनों मेरे लिए बराबर है. So you can understand the mind of the Lord. He never wants to put anybody in anxiety. तो हम भगवान के मन को देख सकते हैं कि वो किसी को चिंता में नहीं डालते. And that's actually something very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. And I wanted to discuss with you tonight. ये मैं आपके साथ आज चर्चा करना चाह रहा हूँ. Many times in our homes, in our families, बहुत बार हमारे घरों में हमारे परिवारों में small conflicts. छोटे-छोटे मनमुटाव होते हैं. Sisters, brothers, isn't it? Mothers, daughters, भाइयों में बहनों में husband, wife, पति पत्नी में. isn't it? And when we think like this verse, that I want to act in a way not to put that person into anxiety. हम इस श्लोक को देखते हैं तो हम ये सीखते हैं कि हमें किसी को भी चिंता में नहीं डालना चाहिए. There's no conflict. तो फिर कोई मनमुटाव नहीं होगा. What is a conflict? कैसा मनमुटाव होता है? What is a conflict? बताइए मनमुटाव क्या है? Mismatch of thought. You want to translate that? विचारों का ना मिलना. It means your thought does not match with mine, which is correct, and yours is wrong. तो आपका विचार मुझसे नहीं मिलता है लेकिन मेरा विचार ठीक है आपका विचार ठीक नहीं है. Then there is conflict. तब फिर मनमुटाव हो जाता है. This is in a house, but it's the same principle when 2 countries are going to war. इसी प्रकार से घरों में होता है. 2 countries going into war. दो देशों के विचार नहीं मिलते हैं तो उनमें टकराव होता है. One leader thinks his vision is correct and that is wrong, so they go into war. एक देश सोचता है कि मेरा दृष्टिकोण ठीक है, दूसरा सोचता है मेरा दृष्टिकोण ठीक है. इस प्रकार से उनके बीच में टकराव होता है. But if each leader was thinking, I don't want to put him into anxiety, or the people, यदि दोनों पक्ष ये सोचे कि मैं उनको चिंता में नहीं डालना चाहता हूँ, लोगों को चिंता में नहीं डालना चाहता हूँ, then there's no conflict. तो फिर कोई टकराव नहीं होता है. Just like Yudhishthir Maharaj, इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज he was put in so much anxiety. वो इतने ज्यादा चिंता में डाले गए. Can you remember some of the anxieties he went through? Can anybody share? क्या आप ऐसी कुछ परिस्थितियां बता सकते हैं जो युधिष्ठिर महाराज को चिंता में डाला गया? Gambling, they lost at gambling. See, he was a king and he was forced to gamble. It was against Dharma for him to do that, wrong challenge. But he accepted because the king said, do this, and he surrendered. You're the king, you say, I do. यद्यपि वो अधर्म था लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र ने कहा था इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उसको स्वीकार किया और उन्होंने
That was a very big offense. Any more? Can anybody remember another offense? The Pandavas, the 5 brothers went or suffered? दूसरी कोई परिस्थिति है जिसमें पांडव हुए थे, कोई बताइए किसको याद आ रहा है? He has another one. Yes. You want to translate? When Abhimanyu was sent in middle of the Kauravas fight in Chakravyuha. The Chakravyuha, he knew how to enter, he did not know how to get out. ये वो जानते थे अभिमन्यु के भीतर कैसे जाते हैं उसके, लेकिन बाहर कैसे निकलते हैं ये वो नहीं जानते थे. And Abhimanyu alone was killing all the warriors. अभिमन्यु अकेले ही सारे के सारे महारथियों को मार रहे थे. And the great Maharathis could not check him, like Drona was there, and Duryodhana and Karna, nobody could stop him. And when they couldn't stop him, then they killed him in a very coward way. Yes, that's a very big offense. Anybody remember another thing? The Pandavas? He's remembering when Durvasa Muni, who has how many disciples? 60,000. 60,000 people coming to your house to have lunch. You can imagine. All of a sudden, right? And he knew after Draupadi had finished, right? जब दुर्योधन ने दुर्वासा जी को पांडवों के पास वन में भेजा था भिक्षा करने के लिए, तो वो दुर्वासा जी 60,000 शिष्यों के साथ आए थे. मेरा विचार कीजिए आपके घर पे 60,000 लोगों के साथ में कोई प्रसाद नहीं किया जाए तो. But Krishna said, wait a minute, Draupadi, look again in the pot. Maybe something is there. पांडव चिंतित हो गए. इसमें द्रौपदी ने भगवान को स्मरण किया, कृष्ण आए और कृष्ण बोले कि जरा अपने पात्र को देखो, जरा पात्र के अंदर कुछ है क्या. So a little rice grain was stuck. So Krishna takes it and he, so satisfying. उस पात्र के अंदर एक चावल का छोटा सा कण था, उसको भगवान कृष्ण ने खा लिया और जब खाया तो भगवान उसको खा के बोले ये तो बहुत संतुष्टिकारक है. Immediately Durvasa Muni felt like he had eaten 20 samosas, 100 katal plates, puri, sabji, halava. He was like, oh my God, we have to go. So he was afraid and he ran out. See, Krishna was protecting. And the Pandavas understood, he wants to disturb me. But there is one incident nobody remembers. It was a very hard incident. I'll give you a clue. It's with Draupadi. You can imagine all the big authorities, Bhishma, Drona, all the saints present, and they're pulling Draupadi, and they're going to take her clothes, dragging her by the hair. Her hair was sanctified for the Rajasuya Yagya. It was a sanctified hair. So Dusashana was trying to pull her sari. And he's pulling. He's pulling. And now he's getting a bit sweat. His sweat is coming from him. He cannot do it. But that's one of the biggest offenses they committed. And it is said in the Vedas, if a chaste woman is harassed, not only the person, but the whole dynasty is finished.
का अपराध किया जाता है तो केवल वो व्यक्ति नहीं जिसने अपराध किया अपितु सारा का सारा कुल नष्ट हो जाता है। But still, Yudhishthira Maharaj tolerated. परंतु फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने उसको सहन कर लिया। We could go on with so many incidents. The house on fire, इस प्रकार से बहुत सारे प्रसंग देख सकते हैं जैसे कि लाक्षागृह जला दिया गया, Bhima was poisoned, भीम को विष दे दिया गया, and so and so and so. बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। Now, it's time for war. अब युद्ध का समय आ गया। Krishna is next to Yudhishthira. कृष्ण युधिष्ठिर के बगल में खड़े हैं। Nobody can defeat Krishna in the universe. कृष्ण को ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा सकता। And Yudhishthira Maharaj is saying, Krishna, let's try one more time for peace. और युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि एक बार और शांति के लिए प्रयास कर लीजिए। If Duryodhana agrees to give us 5 villages, यदि दुर्योधन हमें केवल 5 गांव देने के लिए तैयार हो जाए we are satisfied. तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। Can you imagine that you have a brother and your mom says to him, for you, the best house, for you, nothing. विचार कीजिए, 2 भाई हैं और माँ कहे कि एक भाई के लिए बहुत बड़ा मकान और एक के लिए कुछ नहीं। How do you feel? कैसा लगेगा? Not good. अच्छा नहीं लगेगा। Mm. How do you say good in Hindi? अच्छा। Acha nahi? अच्छा नहीं। Yeah. So, they only wanted 5 villages, वो केवल 5 गांव चाहते थे। and then Duryodhana said, I will not give enough land that a needle will pierce. Not that much land I'll give. तो दुर्योधन बोला कि 5 गांव की बात छोड़िए, मैं आपको सुई की नोक के बराबर की धरती दे दूंगा। And still, Yudhishthira Maharaj forgave. फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने उसे क्षमा कर दिया। So you can see this is very difficult to do. ऐसा करवाना बहुत कठिन है। Today somebody says something very small about ourselves, we're already feeling so angry. Oh, what did he say about me? Why did he say that? आजकल कोई छोटी सी बात कोई कह देता है तो हम सोचते हैं कि उसने मेरे विषय में ऐसा कैसे कह दिया। So this is the quality of a great exalted devotee. तो ये जो गुण है ये तो महान भक्तों के गुण हैं। And these devotees can give you Krishna और ऐसे भक्त आपको कृष्ण दे सकते हैं because they have Krishna. क्योंकि उनके पास कृष्ण है। And they themselves don't need anything. वो खुद कुछ नहीं करते हैं। They don't need anything. वो उनको कुछ नहीं चाहिए। They only need, they have compassion for us. उनके हृदय में हमारे लिए करुणा है। Then they give mercy. वो हमें करुणा प्रदान करते हैं। Okay. वो हमें कृपा प्रदान कर सकते हैं। So we do need the blessings of these great acharyas like A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. तो हमें ऐसे महान आचार्यों की कृपा चाहिए जैसे कि प्रभुपाद जी। So that we can get the blessings of bhakti इस प्रकार से भक्ति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। and discover the greatest secret of this universe. और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को आप जान सकते हैं। Who am I? मैं कौन हूँ? Okay. Any questions at this point? Then I might speak a little bit about cows. Yeah? Any questions about? अभी तक जितना बताया गया उसके संबंध में किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न? No questions. You understood everything. Questions are very important because questions is when the process of self-realization starts. There's a question and then there's some service. That's how it starts. Questions is very important part of the process. You want to say that? You want? maybe some question. तो प्रश्न पूछना ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण भावनामृत में प्रश्न पूछते हैं और गुरु उसका उत्तर देते हैं, तो इस प्रकार से तभी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। You had a question. No,
You don't have a question. Wow, everybody is satisfied. Wonderful. Fully convinced, satisfied. Okay. Very good. So I'm going to read a little quote from Srila Prabhupada. Well, my service is a service which is not easy. मेरी सेवा जो है ऐसी सेवा है जो कि सरल सेवा नहीं है Because today everybody likes technology. क्योंकि आजकल सभी लोगों को तकनीक पसंद है Everybody likes the comforts of the city. The comforts. सभी लोगों को शहर के सुख अच्छे लगते हैं And today we visit one Prabhu. Oh, the microphone. Today we visited one Prabhu who is here in this auditorium. आज हम एक भक्त के घर गए थे जो कि एक मंदिर में बैठे हैं And his land was so beautiful. और उनका खेत बहुत सुंदर था So many fruit trees and wheat and peas and shade. और बहुत सारे फलों के वृक्ष बहुत सारे अनाज और गेहूं और बहुत सारे छाया थी And I'm sure if you were there, you'd agree with me. What a beautiful place. यदि आप सब वहाँ होते तो आप भी मेरी बात को समर्थन करते But we have forgotten that परंतु हम वो सब भूल चुके हैं because our grandparents, they thought, it's better if you study IT. क्योंकि हमारे दादाजी लोग सोचते हैं कि अच्छा रहेगा यदि तुम आईटी पढ़ लो Go to school. स्कूल चले जाओ Your life will be easier. आपका जीवन सरल हो जाएगा So we have forgotten this aspect a little bit. तो हम कुछ मात्रा में ये पक्ष भूल चुके हैं It's still there. I mean, when you eat a little bit, you can feel it. It's still there. यद्यपि वो अभी भी है हमारे रगों में हम थोड़ा सा खो जाएंगे तो पता चलेगा So my service is to remind everyone how important the cows are for Krishna. तो मेरी सेवा है आपको याद दिलाना तो किस प्रकार से भगवान गायों से प्रेम करते हैं How important it is to grow your pure food. ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम अपने लिए शुद्ध भोजन तैयार करें Yes, very important. बहुत महत्वपूर्ण है But if I make a little question, how many of you want to go back to the village? यदि मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग वापस गांव में जाना चाहते हैं? One. Really? You have to start your farm community tomorrow. Have so many candidates. आपको अपना फार्म भी शुरू करना पड़ेगा आप पास बहुत सारे लोग हैं फार्म कम्युनिटी के लिए Actually, when I was in India, my very first time, in 1981, जब 1981 में भारत पहली बार आया था my father came here to do his PhD thesis. मेरे पिताजी यहाँ पर पीएचडी थीसिस के लिए आए थे He's a plant breeder. वो पौधे आरोपण करते थे And he came to India to study in Andhra Pradesh, in Ikrisat, at the time a very big institute there. तो वो पौधों का कैसे ब्रीडिंग करते हैं उसको पढ़ने के लिए Breeding, ठीक है? आंध्र प्रदेश में Andhra Pradesh, yes, yes. So I was introduced to India in a very beautiful picture. तो मैं भारत को पहली बार आकर देखा तो बहुत सुंदर मैंने चित्र देखा The researchers were intelligent people who were in contact with food and agriculture and villages and nature. मैंने बुद्धिमान लोग देखे जो कि खेतों से कृषि से अच्छे पवित्र भोजन आदि से जुड़े हुए थे So I had an impression of the spiritual India, तो मेरे मन में आध्यात्मिक भारत की छाप लग गई थी the village of India. भारत के गांव की छाप लग गई थी So when I saw this temple, it reminded me of childhood, the traditional format of a temple. जब इस मंदिर को मैं देखता हूँ तो मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है There's a certain flavor of tradition. यहाँ पर संस्कृति की सुगंध महसूस होती है And that I was introduced to this India at that time. तो मैं इस प्रकार के भारत से उस समय मिला And that impression stayed with me.
वो छाप अभी तक मेरे अंदर है। So, I'm going to read a verse, a quote from Prabhupada. तो मैं प्रभुपाद जी का एक उदाहरण पढ़ने वाला हूँ। Oh, but I'm going to make a question for you. पहले प्रश्न आपसे पूछूंगा। We started talking about the qualities of an advanced devotee. हमने अभी एक उन्नत भक्त के विषय में गुणों की चर्चा की। What was the quality that was described here? बताइए कौन से गुण यहाँ पर इस श्लोक में बताए गए थे? किसी को याद हो तो बताइए। The devotee he is not in anxiety and he does not put anybody in anxiety. So he is self-satisfied, he's tolerant, self-satisfied, tolerant. What other qualities do you understand in a devotee? Tell me. और कौन से गुण आप देखते हैं भक्तों के अंदर? कृपया अपने फोन अपने साइलेंट कर दीजिए। The devotee is tolerant, right? So what other qualities do you recognize in a devotee? और कौन से गुण आप भक्तों के अंदर देखते हैं? Satisfaction. Who said that? Yes, very good. Satisfaction is a very important. Yes. Forgiveness. Excellent. That's an important quality for devotee. Taking care of others. Excellent. You speak English. Come on, we don't need translation. Full of positivity. Yes. What else? Kindness. Yes. Merciful. What did you say? Never in fear. Never in fear. Fearless. Yes. What else? Huh? Humble. Just like yourself. Yes. We're humble. What else? Other quality. He always answers the telephone. Huh? Helpful. Always ready to serve Always ready to serve the Lord. the devotees and the Lord. Yes. What else? Respectful to others, just like yourself. Right. Yes. Honest. Yes. What else? He's hopeful. Hope. He's hopeful, right? One day Krishna will pick me up and take me back. Yes. Any more qualities? He's yes, I was not punctual today. I'm sorry. It was Rasananda. He was late, so I was late. I'm sorry. Actually, today we had such an event, right? We are waiting and going to see so many places and people. He has a very interesting life, I must say. So, yeah, punctual is very important. Any more? Surrender. Simplicity. I asked him today, so you want your son to stay in India or go back to Canada? He said, it's up to him. Simplicity, right? And then I asked his son, so what do you prefer, to stay in Canada? He says, it depends. So everybody's throwing the ball to another. Yeah. Any more? Surrender. Surrender. Yes, he's very surrendered to the Lord. Are you surrendered? आप शरणागत हैं? 50-50. He's honest too. He's not only surrendered, he's honest too. Thank you for your straightforwardness. Excellent. Now, when you think of cows and Krishna, what are some of the qualities which we have? जब गाय और कृष्ण के विषय में सोचते हैं तो ऐसी कौन सी Everybody understands English. No need. Everybody understands English. I can see. You need Hindi? Yes? No? Yes? No? Yes? If you say yes, put your hand up. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Hindi continue. Let's go. 5 is okay. All right, let's go. So, some of the qualities you need when you think about Krishna and the cows. Kindness, yes, kindness of towards the cow. Kindness of the cow giving milk to you. Yeah? Faith, right? Because it's so hard work, you need to have faith. Every day,
Every day. No Sunday. Every day. Yeah? Krishna loves makan, that's why he loves cows. Butter. Krishna loves butter. And that's why he loves cows. That's why he loves cows. Or is it the opposite? Yeah, right. Why butter? It's sharpened green. Yes, but there's another reason. Why butter? Why makan? Matajis, why makan? Have you ever made makan in your lives? It's very tasty, no, because it's very tasty. Very tasty. That's the men's answer. The Mataji's answer. What is it? Why is it so important, makan? Have you ever made makan? Is it easy? It takes time. Time, huh? There you go, making makan, right? Long time. Now, after hard work, someone gets your makan and throws on the floor. How do you feel? So Krishna, he's looking at the love of the gopis, making that makan, and now he's chastising the gopis to see their love come forward. Everybody understand? Everybody understand? Yes? No? 50-50. Did you understand or did not understand? Some devotees. So, I said some so long, right? So, can you remember? तो प्रभु जी पूछ रहे थे कि क्यों मक्खन क्यों कृष्ण को अच्छा लगता है? तो प्रभु जी बता रहे हैं कि गोपियां बड़े प्रेम से मक्खन बनाती हैं। Yeah, because it's hard work. क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है मक्खन बनाने में। And then Krishna comes and he makes some tricks with the hard work of the gopis. तो कृष्ण आते हैं गोपियों के इस कठिन परिश्रम के साथ कुछ लीला करते हैं। And then that love becomes evident. और फिर वो जो प्रेम गोपियों का है वो प्रकट हो जाता है। So good, we talked about tasty, yes, kindness, compassion. What else is connected with cows and Krishna? Everyone, like, person has his likes and dislikes. So Krishna is also a person, so he has also his likes. Interesting. Yes, you could say like that, right? Krishna. जैसे लोगों की अपनी पसंद और नापसंद होती है, उसी प्रकार से कृष्ण भी एक पुरुष हैं तो उनकी भी पसंद और नापसंद है। Krishna likes more burfi or chocolate? कृष्ण को बर्फी ज़्यादा पसंद है कि चॉकलेट ज़्यादा पसंद है? You also like more burfi or chocolate? Yes, that's true. Now, according to the Vedic civilization, वैदिक संस्कृति के अनुसार there are 7 mothers. 7 माएँ होती हैं। Cow is a mother गाय माँ है because you're drinking her milk, क्योंकि आप उनका दूध पीते हैं। and chocolate has milk. चॉकलेट में भी दूध होता है। And who can deny? कौन मना कर सकता है? Pizza also has milk. पिज्जा में भी दूध होता है। And many people like cheese. Yes? Cheese is milk transformed, right? चीज़ दूध से बनता है। So, the cow is not mother. गाय माँ है। Who has got this audacity? Audacity? You know, attitude. How do you say तो it? उनमें ऐसा स्वभाव होता है। You are drinking cow's milk in the very morning. आप प्रातःकाल में गाय का दूध पीते हैं। So Prabhupada is telling us that the cow is our mother. तो प्रभुपाद बताते थे कि गाय हमारी माँ है। And that motherhood is very saintly. और वो मातृत्व बहुत ही संत के गुणों से पूर्ण होता है। Because that milk is not only nourishing your body, वो दूध केवल हमारे शरीर को पोषण नहीं देता, it's nourishing your brain. बल्कि हमारे मस्तिष्क को पोषण देता है। So you can understand the pastimes of Lord Sri Krishna. तो उस बुद्धि से आप भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। You believe that? क्या आप ये मानते हैं? Yes? No? Maybe? Some doubts?
50-50. I like that. I'm going to use that in my lectures now, 50-50. Actually, the science now is starting to research this. The science. विज्ञान इसका अनुसंधान कर रहा है. Tirupati Foundation has invested $35 million in research. तिरुपति संस्थान जो है उसने 35,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं. $35 million, yes. $35 million लगाए हैं. Yeah. To understand this. इसको समझने के लिए. And some of the scientists discovered that there is a substance in the milk called DHA. कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा शोध किया है कि दूध के अंदर एक ऐसा तत्व होता है जिसको DHA बोलते हैं. It's a big acid. The name is very big. I'll just say DHA for short. संक्षिप्त में बोला उसका नाम बहुत बड़ा है. And the brain is made 60% of DHA. और हमारे जो मस्तिष्क है उसका 60% हिस्सा केवल DHA से बनता है. So they made a connection between milk and the brain. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूध में और मस्तिष्क में बहुत बड़ा संबंध है. Especially if the cow is eating green grass. वो भी सबसे ज़्यादा होगा प्रभाव जब गाय हरा घास खाती है. Because the cow cannot produce DHA. क्योंकि गाय वो DHA नहीं उत्पन्न कर सकती है. It takes from the green grass, गाय वो DHA हरी घास से लेती है. goes into the milk, वो उसके दूध के स्तरों में चला जाता है. you drink it, आप उसे पीते हैं goes into the brain. और वो आपके मस्तिष्क में चला जाता है. Then you become intelligent to understand Krishna's pastime. आप कृष्ण की लीलाओं को समझने के योग्य बुद्धिमान हो जाते हैं. So the cow is not only a mother about your body, तो गाय केवल आपके शरीर का पोषण करने वाली माँ नहीं है. it's giving opportunity for us to understand higher philosophy. वो हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करती है जिससे कि हम श्रेष्ठ दर्शन को समझ सकते हैं. Yeah. Any doubts? Any questions? Any किसी को comments? प्रश्न है? How many of you drink milk? Daily, every day, every day. Daily? 50-50? Okay. And your milk is cold or hot? आपका दूध ठंडा होता है गर्म पीते हैं. Gorum. और Gorum. Before going to bed. बिस्तर में जाने से सोने से पहले Pure milk शुद्ध दूध पीते हैं or supermarket milk? या फिर मार्केट से खरीद के पीते हैं. Pure milk. मैं शुद्ध दूध की बात कर रहा हूँ. And when you drink, intelligence comes. When you drink, the intelligence comes. हाँ, जब आप उसको पीते हैं तो आपका बुद्धि विकसित होती है. So let's read another slide for you. This is important. दूसरा स्लाइड देखते हैं. Without protection of cows, बिना गायों की रक्षा किए Brahminical culture cannot be maintained. ब्राह्मण की रक्षा नहीं की जा सकती. And without Brahminical culture, बिना ब्राह्मण संस्कृति के the aim of life cannot be fulfilled. जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है. See? You believe that? क्या आप मानते हैं? Yes? Sure? Not 50-50? You're sure? क्या आप पूरी तरीके से इस बात पर विश्वास करते हैं? I am going to tell you why. मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों. We heard today Krishi and Rishi. हमने आज सुना कृषि और ऋषि के विषय में. The rishis would drink milk. ऋषि वो होते हैं जो गाय का दूध पीते हैं. He would go house to house begging, give me a little bit of milk. वो जब किसी के घर जाते हैं तो थोड़ा सा दूध याचना करते हैं. And nobody would deny. Yes, please take कोई this. मना नहीं करता था ऋषि को. Because he understood milk can nurture his intelligence. क्योंकि वो ऋषि लोग जानते थे कि दूध से उनका मस्तिष्क विकसित होता है. And the bull was doing your krishi. और वो बैल का
Shri Radha Govinda Ji ki. There's still one small article, no? 9 o'clock. Complete Kirtan. Me? Static Kirtan. ये 9 बजे तक कक्षा चलेगी, 9 बजे से फिर कीर्तन होगा। 9 minutes. So you have 9 minutes. So the bull was helping us to have grains. तो गाय हमारी सहायता करते हैं अनाज उत्पन्न करने के लिए। बैल, The bell. बैल। We could transport so many of you remember in the village this big bullock carts full of rice, paddy, wheat, sugarcane. आप में से बहुत लोगों को याद होगा बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ जिनके अंदर बहुत सारे अनाज, गन्ने आदि होते थे। The bull, when he is walking, जब बैल चलता था, and you are in the bullock cart, जब आप बैलगाड़ी में बैठे हुए होते थे, all your chakras get regulated तो आपके समस्त चक्र कार्यान्वित हो जाते थे। because the speed of the bull जो बैल की जो गति होती है and the speed of your internal body और आपके आंतरिक शरीर की जो गति होती है are similar. वो समान होती है। When you drive a tractor, जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं it's different. तो वो समान नहीं होती है। The tractor driver wants to kill you. He's driving on top of you. ट्रैक्टर चलाने वाला तो आपको मारना चाहता है। You have to take your car out very quickly, otherwise he will run over you. आपको अपने आप को बचाना पड़ता है, नहीं तो आपके ऊपर से निकल जाएंगे। That's because he's connected to the petroleum, the power of petroleum. क्योंकि वो तो पेट्रोल की शक्ति से जुड़ा हुआ है। And that is in his brain. वो उसकी बुद्धि में है। So he's thinking, I'm very powerful. वो सोच रहा है कि बहुत शक्तिशाली हूँ। Everybody move. सब लोग हट जाओ। Yes, I am powerful. मैं शक्तिशाली हूँ। Also some people in motorcycles have the same, right? They go like accelerating कुछ because लोग इसी तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हैं। they think it's me, I am great, I am doing this. वो सोचते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। But actually, it's the petroleum who has influenced his mind. लेकिन करने वाला तो पेट्रोल है। So, when the bulls do agriculture, the cows are protected, the rishis are present, you have dharma. तो जब बैल कृषि के लिए प्रयोग किए जाते हैं और गाय का दूध प्रयोग किया जाता है और संत लोग होते हैं, तो इस प्रकार से धर्म व्यवस्थित रहता है। Dharma. So, the dharma of the children is to. What is the dharma of the children? You're not children anymore, you're grown-ups, but what's the dharma of children? बच्चों का धर्म क्या है? Study. Sure. Shota bacha. Play, right? But today the bacha shoto are studying. तो बच्चों का धर्म है कि वो खेल कूद करें, लेकिन आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं। Yeah, I have friends with 3 years old, they're studying already. 3 साल का बच्चा आजकल पढ़ाई करता है। Before 7, 8, 9, 7वीं 8वीं कभी से पहले। before only play. पहले के समय में Yeah. 7 साल 8 साल 9 साल में पढ़ाई शुरू करते थे। Now the parents are thinking, for my daughter to be a doctor, she has to start at 3 years old, so she can make it. आजकल माता-पिता सोचते हैं कि मेरी बच्ची को डॉक्टर बनने And she agrees. She agrees. Okay. So dharma means everything is in the right place. धर्म का अर्थ है सब कुछ सही स्थान में रहे। Krishna is in the right place. कृष्ण सही स्थान में रहे। I understand my duty. मैं अपने कर्तव्य को समझूं। I do my duty because it's my duty, not because I get some reward. मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं क्योंकि वो मुझे कर्तव्य का पालन करना है, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ पुरस्कार चाहिए। So, on another day, we can talk more about the cows and the Brahmins and agriculture. It's quite interesting. हम किसी और दिन गाय, कृषि और धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। There is one mantra that I used to sing when I was a young bhakta. जब मैं युवा भक्त था तब मैं एक मंत्र गाया करता था। Would you like to try? क्या आप मेरे साथ गाना Yeah? चाहेंगे? It goes like this.
Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Oh. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Everybody, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya. Radha Ramana Hari, Govinda Jaya 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 Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala 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 Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya.